अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमने एक मरतबा फिर इकरा शौकत साहबा को दावत दी है अपने स्टूडियो में कि वो आए और हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें उनको एकेडमिक दें। तो ये तारुफ़ मैंने पहले भी कराया हुआ इनका, तो वैसे भी तारुफ़ की मोहताज नहीं, लेकिन शॉर्टली हमको बता दूँ कि ये इस वक्त एक्टिंग डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स हैं और ये बहुत सी यूके की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ काम कर चुकी हुई हैं और कर भी रही हैं, और इनका यूनाइटेड किंगडम के साथ काफ़ी इनके आना जाना भी है और फ्लुएंट भी है उनके साथ। तो आज मैंने एक यूनिक इनसे एक इंटरव्यू कर रहा हूँ। वो ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग कैसे हासिल की जाए, कैसे क्योंकि हमारे नॉर्मली जो होते हैं व्यूअर्स या कैंडिडेट्स होते हैं, उनका बैकग्राउंड जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, उर्दू मीडियम में पढ़ के आ रहे होते हैं और उनको आगे जाके प्रॉब्लम्स होती हैं। ख़ास तौर पे जब इंटरव्यू के वक्त जाते हैं तो अक्सर लोगों को यही ख्याल है कि जो इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकता है वही सक्सेसफुल होगा। तो आज हम इकरा शौकत साहबा से दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें इस बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा जो एक थोड़ा सा मैंने ये देखा, अगर यूरोप हम लोग जब जाते हैं तो अगर हम जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं, उनको इंग्लिश नहीं भी आ रही होती, और सॉरी आती भी है, लेकिन वो आपसे इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं करेंगे। जो भी जिंदा कौमें हैं वो अपनी जो है लैंग्वेज को प्रेफर करती है। हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हुई है कि हम लोग क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी के से दौर से गुजरे हुए हैं और अभी तक हमारे पास कॉलोनियल सिस्टम के जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो लेकिन उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा 80% जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो रूरल एरिया से आ रहे होते हैं, या जो आप समझ लें कि जिनके पास एजुकेशन की अच्छी एजुकेशन की नहीं होती, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती। अब इस सिलसिले में हम देखते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्सेल कर जाते हैं। अब उनके पास अक्सर औकात मैंने देखा है कि उनके पास नॉलेज इतनी बहुत नहीं होती, लेकिन अपने इम्प्रेशन से और एक्सप्रेशन से वो ज़्यादा क्वालिफाई कर जाते हैं। जबकि जो लोगों को टेंसेस में भी आते हैं, हर चीज़ वोकैबुलरी में भी मास्टरिंग होती है उनकी, लेकिन इवन देन वो रह जाते हैं और ख़ासतौर उनको जो यही स्टिग्मा उनको लेके बैठ जाता है, और जिसकी वजह से ये हमें आज प्रोग्राम करने की ज़रूरत पेश आई। ताकि मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इस बारे में रोशनी डालें कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं ख़ासतौर पे जो रूरल एरियाज़ की हैं, उसके अलावा कोई ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आप समझते हैं कि उनको वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी, स्पेशली इंग्लिश में। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं उनको टेंसेस उनकी बेस बहुत अच्छी फिर भी होती है, इवन देन वो बोल नहीं सकते, और ख़ास तौर पे वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस जो होता है वो शेक हो जाता है, और वो बड़े अच्छे अच्छे हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू स्पेशली वो अपना लूज़ कर जाते हैं कॉन्फिडेंस और वो रह जाते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने आपको दावत दी है कि अपने स्टूडियो में कि आप आएँ, यहाँ आके मेरे के जो नाजरीन हैं उनको बताएं कि वो कैसे इंग्लिश स्पीकिंग में मास्टर हो सकते हैं, और क्या वाकई ही हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अभी अगर नहीं हो सकते आप उनको क्लैरिटी के साथ बता दें, और अगर उनके आप समझते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसे स्टूडेंट जो हैं कैंडिडेट्स हैं वो कुछ हमसे सीख के एक्सेल कर सकते हैं और अपना जो है कॉम्प्लेक्स दूर कर सकते हैं, तो काइंडली फिर उनको उस सिलसिले में आप लेक्चर दे दें। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिटेल इंट्रोडक्शन, और आपने बिल्कुल सही प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है। दो चीज़ें हैं, हमें एक इशू ये है कि वी आर गुड इन राइटिंग बट वी आर नॉट गुड इन स्पीकिंग। अब देखिए, जो जिंदा कौमें होती हैं, जो भी हमारा चल रहा है उसमें हमें इंग्लिश अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्किल है, तो हमें उस स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। कॉलोनियल माइंडसेट है या नहीं है ये बात की बात है। अभी अगर हमें सक्सेस के लिए हमने एक ऑफिशियल लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है तो वी मस्ट बी गुड इन इट, सो डैट, और यही डिमांड कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी मल्टीनेशनल है, कोई भी नॉर्मल सी भी जॉब है, जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल है तो वी मस्ट बी गुड इन इट। देयर इज़ नो सेकेंड एक्सक्यूज फॉर इट कि हम उससे भाग जाएं। अब इसका ये कि हम हाथ पे हाथ रखने की बजाय वी मस्ट लर्न इट ग्रेजुअली, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, क्योंकि हमारी एक चीज़ है नहीं, हम उसको ऑन कर रहे हैं, हम उसको फेक कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना रहे हैं। उसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। फॉर दिस वी नीड टू मेक कॉन्शियस एफर्ट
क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी नहीं है. हमारी जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है लाइक उसमें सब इंग्लिश में है. तो हमें वाई नॉट कि हम ये सोचे कि ये किसी और की है. अगर हम उनको देखते ना तो हम उर्दू में अच्छे, ना हम इंग्लिश में, ना ही अपनी नेशनल लैंग्वेज में. सो इट्स यूजलेस, पॉइंटलेस. तो इट्स बेटर कि हम इन एरियाज पे काम करें और इंग्लिश पे फोकस करें. जब एक चीज़ हमारी नीड ऑफ आर है, अगर हमें बाकी नेशंस के साथ कंपटीशन करना है तो वी मस्ट बी गुड इन इट. उसके लिए मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक इन डिटेल बताऊंगी और वो मैं 1-to-1 सेशन करूंगी अपने ऑडियंस के साथ. थैंक यू. तो गोया कि आप कह रही है कि जो हमारे कैंडिडेट्स अक्सर आते हैं वो जिनका बैक जो नहीं बोल सकते इंग्लिश में, तो आपका ख्याल यही है, आपकी कन्विक्शन यही है कि वो अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो इसमें एक्सेल कर सकते हैं और जा सकते हैं. और इंटरव्यू के वक्त अब क्योंकि अब अगर प्राइवेट सेक्टर में वहाँ भी जाना है तो इंग्लिश स्पीकिंग जो है मस्ट हो चुकी हुई है. और ख़ास तौर पे जो हायरत, जब आप अच्छी पोस्टों पे आप जाना चाहते हैं मज़ीद, तो उसके लिए तो जितनी आप बड़ी पोस्ट होगी उसके लिए इतनी ही बड़ी रिक्वायरमेंट आपकी साथ साथ चलेगी. तो आप काइंडली अब इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिंगल एक लेक्चर दे दें और लोगों को, हमारे कैंडिडेट्स को बता दें कि कैसे वो तैयारी करें. फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा. अब आप कंटिन्यू करें अपना लेक्चर, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. Assalamualaikum, Iqra Shaukat here. Today's topic of discussion is how you can improve your speaking skill. Like every skill, we need effort, concentrated effort. And these days, speaking skill is very important because we have to work in different dimension, in different areas. Even if you are student, even if you are doing job, whatever, we must express our thoughts. So for that, we need skill. And for the speaking skill, it's not an overnight process. It's a gradual evolutionary process, and we have to take you know a concentrated effort on a daily basis to get the skill so we can stand out among others, because obviously it's our official language and we have to work in a globalized world, and for this we need English in a best possible way. So let's get started. I'm going to share 5 most important tips and tricks which could be helpful for you in the long run, and this is going to help you in every arena of life, either it's personal life, it's professional life, whatever. So one by one I'm going to discuss and how you can improve it on a daily basis to get the maximum benefit from it. First of all, you must not be camera shy. For you have to record your motion. You have to speak on random topic for 5 to 7 minutes on daily basis, and you can see how on daily basis you can improve. Let's say for the any topic, like first session is about how you can introduce yourself. In the second session, what are you good at? In the third session, third day, how you can see yourself after 5 years. And like these are the generic topics, but it is going to help you in the job interview, in introducing yourself, and in communication or interacting with other people in day-to-day life. It's very basic thing. We have to do the maximum interaction, and because of excessive use of social media, we are getting more lacking on the personal skill. We are not good in speaking, listening. We rather prefer to write on the message, or these things do affect us on our personality overall. So you have to practice it on daily basis, like 5 to 7 minute session on daily basis, and record it and see yourself, because you are your better judge. No one can guide you better than your own self. We must be sincere with our own self, and we must know ourselves how we can stand out from others. And for this we need a good skill, so we can share our thoughts, we can share our ideas. How we are not we have to involve our skills, our senses. We have to express our ideas which are laying in our mind, and for that we need this skill to express our thoughts. One way is to write, another way is to speak. There is not third way. That's obviously symbols, but we are not, that's not a point of discussion here. So we must speak if something is bothering us, if something we like, if we have inclination, we have to share our thoughts at max so other can understand at our own level. Second thing is
if you're not good in English speaking, what you need to do, you have to improve your reading. With reading, you got lot of thoughts and ideas and you can express it. If you do not have the right content, what to speak, the whole life would be you do not know what to speak, where to speak, and how to speak. So it is a concentrated effort and it requires your attention and action at the same time. It's not something like you just do it in your mind, and when you do it consciously, it makes you filter and you think you are judging yourself, another person is judging you. And for this you need to start thinking in English. Like, first of all, your self talk must be based in English, so it would give you maximum comfort, because 80 to 90% we do not speak, we have our own thoughts. We speak much more in our mind than we speak with others. So we must make a practice of speaking in our own mind with our own self, and this would bolster your confidence in the long run, and in any profession you are going to stand out because you know how to communicate your thoughts. And that's a very important skill, because without it, it's pointless. Whatever you, if in your heart, it would be same without knowing others that what you are thinking. So the third thing is, which is for me, is you must know how to pronounce your word. Even though we are not perfect, we have the Asian style, don't fake it. What we are, we have to express what it's inside us. We do not need to fake the European expression, English, American, whatever. If our natural flow is good, our clarity of words are clear, they don't mind what kind of expression you are using. The important thing is you are speaking with clarity of words, and for this you need better listening skill, reading skills, and eventually you would be good in the speaking skill. So all these things are skills are interconnected, and they are going to help you in the long run. Second last is, if you do not know how to pronounce, you must be good in listening. For that, you can, on the daily basis, you need to listen podcast. I used to listen BBC podcast, BBC World English, that's a channel, and it's also available on the iPhone as an app, or you may YouTube it. It's easily available. What you need to do, you have to listen it on daily basis, 5 to 10 minutes. Either you are driving, you are cooking, whatever. If you are willing to change your life, you have to make efforts seriously to learn different skills, because without set of skills, we cannot grow. And because we have the maximum youth, we must utilize our abilities in a right direction, so we can fit into the world and we can deliver better. And for this, we must be complete as a personality, and we must be able to deliver whatever is in our mind. We must express it. Our communication skills and interpersonal skills are very much important in the current era. So podcast do help me a lot. Like periodically I used to listen it on the daily basis. Now obviously I do not feel the need to listen it, but I listen whenever I got the time, because it helped me. It gives the expression, like where to pose, how to raise question, and it helps overall, like in your personality it is adding value. And the last but not the least, even if you are not good in speaking, what you can do, you just need to watch max, and you can take the entertainment for your own benefit. Like you can watch movies, dramas with subtitles. What would help, like you are going to adopt their like natural expression, native expression in your own personality. When you will speak, it is going to help you because you listened it well. Now you can speak it well. These 5 things would be very much helpful if you do practice. Again, the bottom line is, if you are making conscious effort to learn, no one can force you, no one can dictate you what you need to. If you are seriously want to change your life, you have to make action, not based on the words. Your actions are louder than words, so you have to actively participate in the changes in your day-to-day life. So
at the D-Day, it as a cumulative effect, it would add value in your personality, and you can grow in the personal, professional life at the micro or macro level, whatever. So that must be up for now, and I'm going to see you in the next session. See you, Fimani. Allah Hafiz.